Thank you very much for the kind introduction. Notwithstanding my kind introduction, I still envy Toastmaster Ketan and the cute boy. I would like to ask Krishna Priya, who I have to do welcome dance as well. But let me congratulate all the Toastmasters. It is so nice. The moment you enter the hall, you can sense the beautiful energy and the palpable excitement. I think a huge round of applause for all the Toastmasters. The organizers, Ankur, and everyone for having given me this opportunity to be here. Trust me, I've been sitting here for some minutes and I was really enjoying as an audience. I really don't know what we are going to share over the course of next 40 minutes, but as the anchor here said, perception management, very, very critical. Very critical. तो अब देखिए परिचय में अगर आपको सुनने को मिल जाए कि भैया अब जो व्यक्ति आ रहा है वो इंडिपेंडेंस डे की कमेंट्री करता है, रिपब्लिक डे की कमेंट्री करता है, तो आप सोचते हैं बड़ा इंटेलिजेंट। देखिए मुझे 21 साल हो गए, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की थी 21 साल पहले, और 21 साल पहले सीए जब की तो ऐसा नहीं था कि मेरा दिल बहुत सीए पे धड़कता था। मेरा दिल हमेशा से ही पत्रकारिता पे धड़कता था, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर आपने डीडीएचए देखी हो तो जो अमरीश पुरी का किरदार है, जस्ट टू लाइक आई कैन गेट आपको आइडिया लग जाए। लेकिन अगर मेरे पिताजी स्ट्रिक्ट थे, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कब से चाह रहा था उनको बोलना कि मैं जर्नलिज्म में जाना चाहता हूँ, लेकिन एक दिन मैं मेहनत करके चले गया उनके पास और मैंने कहा रेडी, मैं जर्नलिज्म में जाना चाहता हूँ। तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ, बिकॉज यू नो योर पेरेंट्स आर योर वेल विशर, दे ऑलवेज आर। लेकिन अगर मेरे पिताजी डीडीएचए में अमरीशपुरी थे तो मैं भी सिमरन से कम नहीं था। करनी मुझे पत्रकारिता ही थी, लेकिन मुझे लगा कि चलो ठीक है पत्रकार भी बन लेंगे, लंबा जीवन जीता है व्यक्ति, 70-80 साल जीता है व्यक्ति, तो मैंने सीए भी कर ली। लकीली मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था। मेरे होम स्कूल कॉलेज में 100 में 100 आए हैं, केम्ब्रिज स्कूल इंटर कॉलेज में 100 में 100 आए हैं। अगर मेरे मैथ्स में 99 भी आते थे ना तो मेरे चीज पे जो है आप आंसू देख सकते थे। And courtesy that liking that I had for mathematics, chartered accountancy also happened very easily. So it's time back. ये जो एक परसेप्शन बन जाता है ना, सी व्हाट ऑफ कोर्स है, 100 में से 2 ही निकलते हैं, भैया हम तो हैं, अभी तो हैं वो तो। बहुत सरल है। राम के पास 10 रुपए हैं, राम ने 2 रुपए के टमाटर खरीदे, राम ने 1 रुपए के आलू खरीदे, कितने बचे? 7। अभी डेबिट कोड कम्स इन, क्रेडिट कोड गोज आउट लगा के 4.5 बना देते हैं। आप पता लीजिए, आपको बस इतना करना है कि आपको पहचानना है कि आपका हुनर क्या है। रंजीत सर ने बिल्कुल सही कहा, स्टोरी भी बताइए, स्टोरी सुनिए भी सही, शायर भी बताते हैं। मंच है आपका, ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, Toastmasters from across the regions are here and they're sharing their stories. Absolutely powerful story by Ranjit sir as he shared, और मुझे बड़ा अच्छा लगा अपॉर्चुनिटी वाला। अब से मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैंने चला जा रहा तो 2-4 अवसर हो रहा है। एक रंजीत सर के जोरदार ताली। डांस कर रहे हैं और इतनी बड़ी एक्टिविटीज भी कराई। जब लोगों ने पूछा उन्होंने कि भैया कितने थे, पासेस कितनी बार हुए, बड़ा सट्टा लग रहा था, 12.5, 13.5। और फिर जब उसने आंसर दिखाया तो मैं हैरत में पड़ गया। 50% कह रहे हैं, 15 ही कहा था, हमारे 15 ही था। और कईयों ने तो पेयर को भी देख लिया।
बहरहाल, if I was thinking sitting there कि मैं क्या बोल गया 40 मिनट, इतनी अच्छी ऑडियंस, इतनी बढ़िया ऑडियंस, क्या बताऊँ मैं? तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसको एक्रोनिम समझ लूँ, लीडरशिप को एक्रोनिम समझ लेता हूँ और मैं अपने अनुभव से, अपनी कहानी के आधार से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ. Not that you have to agree with whatever I'm saying. You can express and disagree as well. It's a democratic country. So I would like to probably consider leadership as an acronym. Having said that, L stands for life skills. Whether somebody has a technical skill or not, it is all secondary. The first and the foremost thing which was always there, certainly today, where India is right now, it is very essential for us to have a life skill. What is life skill? Even coming here and speaking in front of people, even coming here and expressing the welcome dance, what is fantastic. और उसके बाद वो पहला व्यक्ति जिसने वेलकम डांस किया, वो दूसरे एंकर ने कहा भैया तू रहने ही दे, मुझसे ना हो पाएगा. तो ये भी लाइफ स्किल है कि इसको भी एब्जॉर्ब करना. व्यक्ति ने बड़ा अच्छा एब्जॉर्ब किया, ठीक है नहीं? ये भी लाइफ स्किल है. तो ये बहुत बढ़िया है, आपको लाइफ स्किल डेवलप करने पड़ेंगे. स्किल इज द ग्लोबल करेंसी. आप ठंडे दिमाग से बैठ के ये सोचने का प्रयास करें कि आखिरकार अल्लाह ने मुझे हुनर क्या दिया, और कोशिश करिए उसको एक लाइन में ले आए. जैसे सचिन तेंदुलकर एक लाइन में हिटिंग द बॉल, हिटिंग द बॉल. भैया क्रिकेट में से कई लोग खेल लेंगे, लेकिन हिटिंग द बॉल. मेसी किकिंग द बॉल. इमरान हाशमी, you know it. Get it in one line. Get it in one line. Okay. So when I did that exercise for me, in one line it was asking questions. The pride, the joy, the ecstasy, the bliss I have when I ask question is absolutely fantastic. Today I was up at 4 a.m. today. I was in the office at 4:45 because 6 o'clock we went live. I did the commentary for India West Indies match today. The Women's World Cup is on, so it was India West Indies match. We won the first match against Pakistan, 107 runs. We lost to the host New Zealand. I don't know how many of us are following Women's World Cup. We are. You know, there's no point sending across WhatsApp messages, Happy Women's Day. It doesn't really add much. We should ensure that we watch, at least watch and send out messages to Mithali and her team, because what 83 Queen did for the Men's World Cup, trust me, we have never won the World Cup when it comes to women's. We have come to finals twice, 2005, 2017. If only wishes of 130 crore people go out to Mithali and team, we could well win the World Cup. Today we defeated the mighty West Indies, who were unbeaten in the tournament so far, having got the better of the host New Zealand, and then defending champions England. We beat them by a whopping 155 runs. 155 runs. Toastmasters कि आप ट्वीट कीजिए, इंस्टा पे जाइए, जो मर्जी एक बनाइए आप सीधा कि मिताली भी लव यू, हाँ, स्मृति भी लव यू. These are all members of the Indian team, just in case you're getting emotional. So I think you're very clear. Life skill. Skill is the global currency. Okay? Skill is the global currency. Get it in one line. What's the one skill? So the one I have is asking questions. So I thought during the 40 minutes, I'll ask you a few questions. That's my skill. And if you want to ask a few questions to me, please, more than welcome. Okay? So let me start. Let me start by asking you a few questions. मुझे बताइए, अगर आपको कोई 1 करोड़ रुपए दे दे, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? Somebody gives you 1 crore rupees. What is the first thing you will do? Raise your hand. I come to you. Don't rattle out the answer. Rules of the game are very clear. Raise hand. I come to you. You tell me your name and then the answer. Ask me. This is CA Amit Acha. I approach the CA first. Okay, approach the CA. Very good. बहुत बढ़िया. Okay. But that's not the right answer, Natasha ji. Hi, Toastmaster Ankit. If I got 1 crore rupees, so I will invest 75% of that money and 25% I will return. Okay, so you don't even need a CA. Okay, that means you need a CA, and he already knows where to park the money. Not still quite the answer I was looking for. Yes, please. Toastmaster, if I will get 1 crore rupees, I will try to double. I try to double it. See how we already have seasoned business people right here. Toastmaster Meenakshi this side. मैं पहले चेक करूँगी नोट असली है नकली. नोटबंदी के बाद वो सजग हो गए हैं लोग. Okay, let me get one more person. Yeah, okay, madam, please go ahead. Okay, I'll put it in share market. You know. Share market? Yeah, Very and nice. then you increase it and then I'll. Okay, very good. Still not the correct answer looking for. And repeating the question, if you get 1 crore of rupees, what's the first thing you will do? I call my husband and inform him. Okay. The 21st century wife still has a lot of respect for the husband. That's very nice. Yes, madam. Invest in Toastmaster subscription for the Yes. rest of my life. She is very happy. But then that will be for everybody in the room. I Toastmaster on this side. I'm going to open a new club. Open a new New Toastmaster club. Oh, new club. Nice.
go on a world tour. Well, these are not the right answer. Okay, I see a lot of enthusiasm. So, give one final answer because I have a lot of questions to ask, and of course, you should also ask a few. I will check the zero in the proposal. I'll take the zeros and the crores. It's ma'am 7 zeros. Okay, 7 zeros. Not the right answer. Not the right answer. Yes. If I get 1 crore rupees, I would just be chilling out. I would put that money and will be doing all I'm doing right now, living my life. Incorrect answer. So, let me come to the E. L is clear. L of leadership is clear. Life skills. Technical skills, all secondary. Life skills, very important. Right? Identify the life skill, nourish it, nurture it, take great pride. Don't compare because the other guy who's a good reader, writer, listener, speaker may have worked on it for years. So don't compare and feel insignificant. Make sure that you have your own journey. E. Express gratitude. सबसे पहले thank you बोलिए उस व्यक्ति को जिसने आपको 1 crore रुपए दिए. So what will you do if somebody gives you 1 crore rupees? Say thank you to the person who's given you 1 crore rupees. Yes or no? If you are a leader or you aspire to become one, gratitude is of great importance. We are very, very privileged. We are sitting here, there is water right there on the table, we have a shelter, above our head. But look at India. We still have lakhs of people going to bed every night, not eating full stomach. I'm saying, should not be the objective of Toastmasters to ensure that whatever talent we have within the pool, we multiply it and ensure we serve humanity. Yes or no? No matter what business you do, whatever you do, it should be for humanity. So, it is essential that you have that feeling of gratitude, and trust me, it's a beautiful phenomenon called life. How many people would have gone to bed last night, not woken up this morning? And if we could not realize our own mortality all these years, I think last 2 years, COVID has certainly been a great catalyst to help us understand that this is a mortal life. Yes or no? But whatever 70, 80 years we have, we should really put premium on every second. Because every second in life is a one-time offer. Yes or no? So, all the answers that you are giving is right. But the one I was looking for is saying thank you to the person because ultimately it's 1 crore rupees. 10 raised to power 7. Right? Okay, so we've done the E part. Let me now explore the A part. A. A से मैं हिंदी वर्ड बताता हूँ आपको. अच्छा, क्या अगर आप लीडर बनते हैं, क्या हर वक्त आपको कोई अच्छा कहेगा क्या? क्या हर कोई आपको अच्छा कह सकता है हर वक्त? अगर आप चाहते हैं हर वक्त आपको कोई अच्छा कहे, हर वक्त आप ही सही हो, बताओ लीडर, हर वक्त आपको ही अच्छा कहे, तो क्या करना चाहिए आपको? हर वक्त आपको ही अच्छा कहे. अपना नाम अच्छा रख लो. हाँ, जोरदार तालियां. That's the only way. If you want कि आपको हर वक्त कोई अच्छा कहे, आप अपना नाम अच्छा रख लीजिए. इसका नाम तो अंकुर है ना? तो आप ये गलत ना करें कि जनाब आप लीडर बन गए तो अब आप जो है सब कुछ ठीक ही करेंगे, हर कोई आपको अच्छा ही कहेगा, क्योंकि आप निर्णय लेंगे. D for decision making बहुत essential. क्योंकि आप निर्णय लेंगे, हो सकता है 10 में से 6 ठीक हो जाए, हो सकता है 7 ठीक हो जाए, कुछ तो निर्णय गलत होंगे. और अगर आप किसी को रखेंगे, हो सकता है अल्लाह वो दिन भी दिखा दे कि आपको किसी को पिंक स्लिप देनी पड़ जाए. जिसको पिंक स्लिप देंगे, तभी ग्रेटिट्यूड समझा लो, कुछ टेम्पररी डिसअपॉइंटमेंट तो होगी ना. ये सब नो. तो हर वक्त व्यक्ति आपको अच्छा नहीं कहेगा. गलतियां हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? तो आइए गलती पर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ. लेकिन चैलेंज ये है इस सवाल का कि जो व्यक्ति गलत आंसर देगा वो पार्टी देगा. ठीक है? अगर आपने गलत आंसर दिया आप पार्टी देंगे. ठीक है? तो सोच समझ के आंसर दीजिएगा. Okay, can I have 3 volunteers come here who would like to attempt? Very simple question. Question is very simple. Come, gentlemen. Come, run. Okay, I think that's 3.5. Okay, come, please. Okay, we'll 3.5. इंडिया है, इंडिया में ये 3 ही होता है. इंडिया में सब, इधर सब लोग हैं हम लोग. Okay, मैं आपसे शुरू करता हूँ. गलत जवाब देने पर पार्टी देनी होगी. ठीक है? और लीडर हर वक्त तो अच्छे काम और सही काम कर नहीं सकता, तो कोई निर्देश बताइएगा. जिसको भी आंसर आता हो, मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ. ठीक है तो पूछ. जिसको आंसर आता हो उसी आंसर दे दीजिएगा. ओके? The others don't rattle out the answer, just observe. The question is, and you can answer straight away. Wrong को हिंदी में क्या कहते हैं? गलत जवाब. पार्टी. गलत जवाब. उन्होंने गलत जवाब दिया है. Wrong को गलत क्या कहना? गलत जवाब दे दिया लोगों ने. ओके, जोरदार तालियां सबके लिए. देखिए, आप बतौर लीडर
अभी कृष्णप्रिया अपनी एक्टिविटी में कह रही थी फोकस कंसंट्रेशन, ठीक है? आपको आंसर आता था या आपको गलत नहीं बोलना था इसलिए गलत नहीं बोला आपने? मैंने इसलिए माइक नहीं लिया था। I knew that there will be something in the questions. कभी लीडर को शांत भी रहना, माइक ना लेने की स्ट्रेटेजी है। आपने सही आंसर कैसे दिया आपने? मैंने गलत ही बोला था। आपने सही कैसे बोला? नहीं पता था, कुछ होता। बहुत खूब। कैसे बच गई मैडम आप? बोला ही नहीं। बहुत बढ़िया। तो आप बताइए, इतनी जल्दी आंसर दिया आपने गलत आंसर। I love, आपको मतलब कोई क्वेश्चन पूछा ना, whether you know or not, say it. Very good. Express. Yes. I'm quite a good observer. Very good. Okay. So round of applause for all 6 of them for very clear. I think when we talk about developing life skills, it's essential that we volunteer. I am so happy you all 3 you have developed them. And these people who have walked today and expressed, trust me, nobody can stop them having success in their life. Because expressing is so very critical. Don't really bother about being acha all the time. Make sure that you take decision. There will be wrong decision. गलत भी होंगे, ठीक है, गलत भी होंगे, लेकिन निर्णय ना लेना शायद सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहेगा। आप मुझे बताइए, देश में भी बजट आया है 1 फरवरी को। क्या आप जानते हैं कि आगामी वित्त वर्ष 22-23 में हमारे देश का बजट कितना है? Anyone? What's the expenditure budget for coming fiscal 22-23? India's budget. Should Toastmasters in every citizen of the country know it or not? Yes or no? I would suggest that financial discipline and planning is so essential. Not just for your own business, for every household and also for the country. So for your information, for the coming fiscal that begins 1st of April 2022 till the 31st of March 23, the expenditure budget is rupees 39 lakh crore. 39 lakh crore. And the girl who was saying how many zeros? Lakh crore is 10 raised to the 12 trillion. So 39 trillion. And what's the revenue? 22 trillion, 22 lakh crore. Fiscal deficit कितना हो गया? 39 minus 22, 17 lakh crore. मुझे बताइए, 17 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट। मैडम, नाम क्या है आपका? अभी अगर तुमको मैं घर चलाने के लिए 22,000 रुपए दूं महीना, 22,000 रुपए महीना दूं और खर्चा घर का 39,000 हो, 39,000, will you be able to run the house? हम घर नहीं चला सकते। प्रधानमंत्री मोदी 17 लाख करोड़ के फिस्कल डेफिसिट से देश चला रहे हैं। ये तस्वीर बदलनी चाहिए कि नहीं? टोस्टमास्टर्स को इसमें अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए कि नहीं? आपको अल्लाह ने इतना पोटेंशियल दिया है, क्या 40, 50, 60% पर परफॉर्म करके हम कर लेंगे क्या संतुष्ट हो जाएगा? और इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप सब में लीडरशिप कैपेबिलिटीज हैं, डोंट गेट कंप्लेसेंट बाय परफॉर्मिंग 40%, 90%। आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन रंजीत सर सेड कि मैं फलाना एक जगह पहुंच गया हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर कहो कि ओके रंजीत सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, ठीक है? तो मेरे और आए हमें और अफसर। Yes or no? Till the time any child who goes to bed, not only in India but planet Earth, doesn't go to bed full stomach, our job is not done. I'm not saying take tension about it, but make sure that you are sensitive about it. And that's where we need more leaders. It is not the Prime Minister Modi who is the only leader. It is not only Virat Kohli, not just Dhoni, not Mithali. Each one of us. Therefore, it is not as if भैया वो तो leader है, मैं तो उसके अंदर काम करता हूँ. Everyone can lead. We are the leaders of our own life. We are the actors of our own life. Not डिस्कशन हमने कितने बंद लिए हैं जाकर, तब जाकर हम मानव बने हैं, एवोल्यूशन में सबसे ऊपर माना जाता है, सबसे ऊपर। कहाँ मार्स पे जा रहे हैं, कहाँ चंद्रयान भेज रहे हैं, इस साल भी चंद्रयान 3 भी आएगा, हम गगनयान भी भेजेंगे अगले साल, जिसमें कि 3 लोग बैठे होंगे। तो मानव रंग भेजते थे ना, जो प्रक्षेपण करते थे, अब 3 लोग उस पर बैठ के जाएंगे। सोचिए, है कि नहीं एवोल्यूशन दिमाग का? This is what leadership is all about. कमाल है, कमाल जो हमारे अंदर शक्ति है, absolutely unprecedented. सवाल ये है, are you conscious to leverage it to its full potential? और are you somebody who's got like complacent कि भैया मेरा घर बन गया, अभी ये हो गया, 2 की रोटी मेरी हो गई, चलो ये बहुत बढ़िया हो गया। आपका हो गया, लेकिन जन का हो गया क्या? कोविड ने हमको सिखा दिया है, we are all one. It is not as if you have cough, you have cold, I will be spared. Or if I have some symptoms, you will be spared. We are one. If only COVID can teach us this one lesson, I think 50 years down the line, the next generation is only going to say, thank you, COVID. Because the way we were heading, we were only going bonkers. We were just becoming mad people. Notwithstanding we were at the highest level of evolution, we were doing absolutely crazy things. We thought we are supreme, ahead of nature. It was never the case, never will it be the case. Nature was, will always be supreme. And I hope COVID teaches us that lesson. So are we clear? Life skills. Far more important than the technical skills. E, express gratitude.
1 करोड़ छोड़िए, कोई 1 रुपया भी दे दे तो भी थैंक यू बोल दीजिए, कोई पानी पिला दे तो भी थैंक यू बोल दीजिए, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे दे तो भी थैंक यू बोल दीजिए, ठीक है? अब हर कोई केतन जितना लकी नहीं हो सकता। तो आपको लेकिन फिर भी एक्सप्रेस करना है ग्रेटिट्यूड। आप अच्छे नहीं हो सकते हर पल, अच्छे बनने का प्रयास करें, लेकिन कभी कभी गलती भी होगी, निर्णय जरूर लें। आइए ई पे चलते हैं। ई से एथिक्स। आपके पास अवसर बहुत आएंगे गलत काम करने के भी, क्योंकि जब आप बड़े होते हुए जाते हैं ना, गलत काम करने के भी अवसर बहुत आते हैं। लेकिन क्या गलत काम करना चाहिए? क्या सही समय पर आयकर दे दीजिए ना, पे टैक्स करो, रिलैक्स। अब आप करेंगे, आपको हमें से कोई अगर कोई टैक्स की चोरी करे, क्या नींद आएगी क्या? अगर आपने टैक्स की चोरी करी, कोई गलत कार्य दिन में कर लिया, किसी को मालूम नहीं पड़ा, आपको तो मालूम है। आप जब सोने जाएंगे, हल्की सी आहट होगी, आपको लगेगा कहीं वो इनकम टैक्स ऑफिसर तो नहीं। लेकिन अगर आपने जीवन के मूल्य ऐसे रखे हुए हैं, एथिक्स आपके ऐसे हैं कि इंटेग्रिटी आपका प्राय है, रात को हल्की सी आहट होगी, आपको लगेगा कहीं वो तो नहीं। मैं आपको व्यक्तिगत बता रहा हूँ, आज I'm 44 years of age, 21 years into chartered accountancy, 20 years into the Shubhati radio. If somebody asks me what's your one big उपलब्धि so far, I'm saying I don't take even one medicine, no medicine. वो इसलिए कि मुझे कोई ज़्यादा बंगले गाड़ी ऐसा कुछ बनाने का है ही नहीं। मुझे तो अच्छी नहीं लगती भैया, मैं तो अच्छी नहीं, मैं तो सुबह उठ जाता हूँ। इलेक्शन वाले दिन 12 घंटे लाइव किया मैंने, परसों 8 बजे लाइव गए थे और 5 चीफ मिनिस्टर बनाकर 8 बजे शाम को गलत तरीके से बनाया हुआ पैसा हमको नहीं लगता है। कौन क्या कर रहा है मालिक बोली, आप क्या कर रहे हैं? और इसलिए जीवन में मूल्य जरूर बनाइएगा, उसमें एथिक्स को सर्व में रखिएगा, नहीं तो जैसे जमेगा नहीं आपको। आर रिस्पॉन्स यूजुअली we react, especially with listening. When somebody says something, we are not very keen to understand the quality, we are not willing to improve the quality of listening. If reading happens to you, writing happens to you, listening happens to you, it is only then as a byproduct that speaking will happen to you. So when you respond consciously. When you react impulsively. Unfortunately, again, when it comes to perception, many people feel this particular generation, notwithstanding the technology that they have, notwithstanding the higher education degrees they have, yet we think that this generation is a generation of instant gratification. You say no to the child. Sometimes I think the mothers and the fathers should try saying no to a child. He wants a balloon, you give him the balloon. He wants noodles, you give him noodles. He wants to do this, you give him that. He wants to play mobile, you give him mobile. I'm saying one fine day, please try to say no. If he go berserk, he says to me, no, me nahi. You know, to mere pitaji nahi. Don't get hurt. You may say that, right? I'm saying that you have to learn to teach that guy how to respond to no. Otherwise, he's going to struggle. Because आज तो आप दे देंगे सब कुछ, कल 130 करोड़ की आबादी का उसका रेड कार्पेट वेलकम करेगी। तो आपको समझना पड़ेगा जीवन का उतार चढ़ाव है, लिहाजा हर चीज पर रिएक्ट नहीं करना अपने को। कभी-कभी शांति भी रखनी है। तो लीडर को खासतौर पे जो लीडर होने का दावा कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड करता है। अभी आ गए हम एस और एच पर। कोई बता सकता है एस एच कंबाइन कौन सी स्किल हुई लीडर के लिए? जस्ट से द आंसर। एस एच बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं? शांत रहना। ओके, हिंदी का एस एच शांत, इंग्लिश में बताइए एस एच क्या होगा? शार्प। ओके, ये आजकल शार्प है काफी चल गया। शार्प। ओके, गुड डे। शट अप। ओके, शेयर्स। हाँ जी। One thing that distinguishes human beings from every other being. Smile. So what is SH? Sense of humor. अगर आप लीडर हैं, आप 16 से 18 घंटे कार्य करते हैं, आप बैलेंस शीट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, पीएनएल में कभी मुनाफा आ गया, कभी नुकसान, कभी बैंक का रिकंसिलिएशन हो नहीं रहा, तनाव देखो क्या? आपको सेंस ऑफ ह्यूमर बनाना पड़ेगा। और सेंस ऑफ ह्यूमर आपके अंदर है, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे कहते हैं, कभी हंसता नहीं, कभी जीवन हंसा होगा, कभी आपको लगता होगा ऐसे देख करके। आप हंस सकते हैं। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि आप हंस सकते हैं। क्या आप बोलते समय एक प्लीज इंजीनियर रखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप कल्पना नहीं कर सकते कि मुस्कुराहट का दामन कभी ना छोड़ें। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप मुस्कुराहट अगर रख रहे हैं कितने खूबसूरत लगते हैं आप। You may not be Ketan, you can still be hot. You know, if only you wear a smile. And I'm very sure the cute boy will also appreciate that. You know, the smile is what really adds to cuteness. तो मेरा सवाल मोहतरमा आपसे है, नाम क्या है आपका? आयुषी, मुझे बताओ, सोना पहन लो चांदी पहन लो, सबसे बड़ा कहना? सोना चांदी चाहिए कि मुस्कुराहट? तो सोना चांदी मुझे दे दीजिए। मेरा मुस्कुराहट से भी चलेगा, सोना चांदी की कमाई है।
पता लगा वो लड़का कह रहा है 1 करोड़ का क्या करूँगा, मैं आयुषी को दे दूँगा। तो I hope sense of humor is developed, right? When you have no baggage, you get the right answer. Sometimes in an interview, they may ask you a tricky question. Sense of humor will help you to diffuse the situation, right? Let me give you an example. So, what's your name, sir? Anshuman. Anshuman, बुर्ज खलीफा का नाम सुना है आपने? दुबई की बहुत बड़ी बिल्डिंग है। मुझे बताइए आपसे 100 साल के बाद बुर्ज खलीफा का नाम क्या होगा? Bush Khalifa. नहीं जी, क्या? सर, Bush Khalifa. that's right. बुर्ज खलीफा। अगर आप बुर्ज खलीफा कहते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन बुर्ज खलीफा में देखिए तालियां कितनी पड़ी। सर कैसे आप जान पाए सर? कैसे शोध किया आपने ये? दिल्ली में भी एक बुजुर्ग खलीफा जिसे कुतुब मीनार है। Okay, good. So, there is sense of humor. Very, very essential, right? When you think that you have no clue where life is heading, there will be days when you have no clue, right? And such is human behavior. आज का दिन बड़ा अच्छा गया, बड़ा सब कुछ लग रहा है, सब कुछ ठीक जा रहा है। मैं ही हूँ हीरो लाइफ का। और बीता क्या आप करते हैं, खुशी नहीं जा रहा। ना मेट्रो आप समय पकड़ पाए, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, ड्राइवर आया नहीं, बीवी तो झगड़ती ही है। तो मैं कह रहा हूँ आप लगते हैं मेरी जिंदगी है, मैं हूँ ये। तो आप कहते हैं अल्लाह मेरे साथ ही क्यों? But you have to still have sense of humor. You are alive. You are alive. This itself is a very big thing. You are alive. This is a very big thing. If you think being alive is not the big thing, please one fine day go to a hospital, look at the ICU. These people who do not know whether the next breath will come or not, they'll be very happy to be in your and my position. Right? One bad day could not mean bad life. And sometimes the bad day will come because after all life is a twist. The twist is always going to be there. Very important. I think we just celebrated Women's Day. Women are particularly guilty of not focusing on themselves, but ultimately I is also very essential. Right? For everyone, not just women. Self-love. So if I make boundaries for myself, like for example, when I've started my session, like I switch off the cell phone. I switch off the cell phone. I am not taking calls. I don't take calls. When I'm reading news on television, I'll not take calls because I'll be there. Technology is for me to leverage, multiply my outcome. Not that I am bonded to the technology. मैं आपको मुबारक दूंगा अगर आप अपना एक बना लेंगे जनाब कि 9 बजे के बाद मैंने फोन बंद कर दिया। ये ना हो कि 11 बजे आप फोन देख रहे हैं, 11 बजे पता लगा मोहतरमा ने फोटो डाली, 12 बजे चेक कर रही है, अगर कुदरती लाइट नहीं आया तो फोन ही तोड़ दिया। सुबह उठते थे पहले भगवान का नाम लेते थे, अभी सुबह उठते देखते हैं लाइक कितने कमेंट कितना है, अरे आपकी फोटो पे लाइक नहीं आया, अरे आपकी पड़ोसों पे लाइक आ गए। आप सोचिए बीपी बढ़ जाता है सुबह। ये चीज़ें कोई जीना है क्या? तो आपको देखना पड़ेगा कि आप सबका ख्याल रख रहे हैं, अपना रख रहे हैं क्या? If the cup is not full, will you be able to pour into somebody else's cup? Please don't make that mistake. And that is not being selfish, right? अगर मैं कहता हूँ 44 में मेरी सेहत अच्छी है, सेहत का मतलब सिर्फ शारीरिक सेहत नहीं, मानसिक सेहत भी। और मानसिक सेहत का परिचय क्या है? मुझे बताइए, मेरे माता पिता खुश होंगे कि नहीं होंगे कि मेरा बेटा जो है सुखी है? और अगर मैं आज एम्स नहीं जा रहा हूँ इलाज कराने, क्या हेल्थ फॉर ऑल में मेरी कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है कि कम से कम हेल्थ बर्डन नहीं बढ़ा रहा हूँ? सो नो, इफ ओनली यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई थिंक इंडिया विल बिकम डेवलप्ड विद इन अ मैटर ऑफ 5 years. Please at least take care of yourself. Please take care of yourself. Can you do that? And therefore, please, I personally believe being selfish also is not wrong. So self-love is very essential. Create boundaries. Take no decision that is detrimental to your peace. Right? If you are not peaceful, please don't do that. And such is the mechanism, whether body or soul, from energy, you realize, ये नहीं कहता मेरा, ये दोस्त मेरे जैसे दिख रहा है, तो छोड़ दीजिए ना, 130 करोड़ के बाद में वही रह गया क्या? दोस्ती के लिए, ठीक है कि नहीं? दोस्ती भी उससे करती है, तो आप बदले को घूम रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो आई बहुत जरूरी है, लेकिन आई के साथ साथ पी क्या है? पीपल। मानवता में ये 7 बिलियन लोग एक साथ जुड़े हैं, तभी तो लीडर की आवश्यकता है। लीड अपने जीवन को भी करना है, लीड 7 बिलियन से ज्यादा लोगों को भी करना है। कोई पोलियो से ग्रस्त ना हो, कोई कोविड से ग्रस्त ना हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 50 के दशक में पोलियो की वैक्सीन आ गई थी? जोनास सॉक invented the polio vaccine in the 50s, and such was the scientist that he did not do patent on it, because had he done patent it would become very costly. Now you know दो बूंद जिंदगी की, you know everybody gets it. लेकिन भारत पोलियो मुक्त कौन से साल में हुआ? 2014। 1950 में वैक्सीन आ गई, 2014 में हम जाके हुए। ये जो 50 सालों में जिसको ड्रॉप नहीं लगी और वो ताउन में लंगड़ा कर चल रहा है, क्या हम बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते थे?
और 2011 में जो अंतिम केस हुआ है, बिकॉज पोलियो मुक्त होने के लिए WHO का क्राइटेरिया है कि कोई भी देश में लगातार 3 साल कोई केस नहीं होना चाहिए। सो द लास्ट केस इंडिया रिपोर्टेड वाज इन 2011, और जानते हैं वो कौन थी? 2 साल की बिटिया। जिस दिन पल्स पोलियो रविवार आया तो उसका बड़ा भाई था, माँ बाप बड़े भाई को ले गए, तो यार बेटी है इसको क्या ले जाए, 2 साल की थी, उसको पोलियो हो गया। That's the last registered case. I'm saying 50 years it took while the vaccine was right there. As humanity, can we forgive ourselves? I'm asking you. Now the point is not that we harp upon the complaints and whatever wrong we may have done. I'm saying we are Toastmasters. We are going to raise the toast because we are celebrating this beautiful phenomenon called life. As a leader, we will make mistakes. Let's be very kind to ourselves. Even when we make mistakes, let's not really take it to the heart. Only learn a lesson from it and make sure that the next time around, at least don't make that mistake. Please make a new mistake, right? So I think in limited time, this is what I think is what leadership is all about. So that is from my side, the question that I've asked. Let's have some questions coming from you. And you can agree, disagree, add value to whatever I have put to the table. Yes, please. Do you hear anyone asking questions? Yes, sir. केतन ने स्टार्ट किया था परसेप्शन से, एंड मेरा भी कुछ अपना परसेप्शन है परसेप्शन के लिए, बट आई वांट टू आस्क दैट व्हाई परसेप्शन इज कॉम्प्लिकेटेड एज यू सेड. Because the person who is receiving the message receives the message from his limited understanding. Yes? Like for example, if we say we're all energies, and not just you, this table is also energy, we are not going to understand. For somebody who is not a student of physics will not understand because it has not been his experience. Unfortunately, in life we have a perception because our experience is limited. When somebody has an experience, it is very difficult for that person to tell the other because after all you cannot really teach. It has to be a practical experience. Right? That is why till the time a particular person does not have his or her experience, they will only live with a certain perception. Yes. Yes, please. What is your Toastmasters story? My story is that, at 44, I'm very happy that I've been able to make a successful career in journalism. I'm very happy that I've prefixed CA against my name. And you'll be very happy to know that after doing all of this month of January this year, I signed a film. And in June, my film is going to hit the OTT platform, so I'll be an actor. तो अभी जून के बाद मैं ये होऊंगा एक पिक्चर करने के बाद, भैया शाहरुख की एक्टर है, सलमान की एक्टर है, मैं भी एक्टर हूँ, ठीक है? 200 करी पिक्चर मैंने एक करी है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरी पिक्चर चल गई इस साल, तो अगर मुझे काजल पसंद है या मुझे लगता है कि मुझे कटरीना के साथ काम करना है, तो मैं ये सपना देख रहा हूँ कि भैया बनेगी पिक्चर, क्यों नहीं? मुझे लगता है वक्त बदल गया है, अब स्टोरी आपकी हीरो है। 80 के दशक में 70 के दशक में क्या है, धर्मेंद्र जा रहा है ऐसे मोटरसाइकिल में, और वहां से गुंडों की जो पूरी फौज है स्टेज में लगा रही है, मजा आ रहा है धर्मेंद्र को नहीं लगता है, लेकिन धर्मेंद्र चलते चलते ही छोटी सी पिस्तौल लगाएगा, ऐसे करे सारे बच जाएंगे. But that picture used to be a hit. Now come to 2022. Look at the films that are being made. And I think because the script has become a hero, your and my story can also be portrayed. You and I can also be a lead character. That's why I made this film. Hi everyone, I'm Toastmaster Rishabh for children's context. Sir, आपने बात करी थी ethics के बारे में, and for me ethics is such a grey area. As Indians, we take pride in ourselves when we talk about जुगाड़, कि कुछ काम किया ऐसे चुटकी लगा के जुगाड़ से कर लिया, और उसमें everyone relates और सबको मजा आता है, सब कनेक्ट भी करते हैं कि हाँ हमने भी ऐसे किया था. But कहीं ना कहीं जब हम जुगाड़ करते हैं, हम अपने ethics, we are compromising with our ethics. So my question is, where do we draw the line, or how do we really define the term ethics? You know, the challenge with ethics is that it cannot be defined. If you think that night when you did something, you are not able to sleep peacefully, please don't do that. Right? That is what it is. So for somebody who's hungry, I'm saying even if he ends up stealing a chapati from somewhere, I would still forgive that person because that is okay. But the point is that you have to not seek validation from your neighbor when it comes to ethics. Your conscience will guide you whether what you're doing is correct or not. Yes, please. Yes. So my question was that as you were talking about a leader, and leader's best quality is to remain calm in the very tough situation, right? So my question was, what is the thin line that you think there is between remaining diplomatic to your subordinates and kind of scolding them for some wrong or done, like for example the Ashwin says, right, that क्या कर रहा है तो ये बंद कर दे ऐसे, right? So like what is the thin line when we have to really show
kind of an authoritative tone and kind of anger. Yeah. See, first of all, anger is not a bad emotion. Had that been the case, nature would have not got that emotion into us. So if somebody of us get angry, not that you should be feeling depressed about it. The only thing is, are you channelizing your anger in the right direction? So if a young guy is very angry with the way a certain system is running and channelizes his emotion of anger in the right direction to bring solution to the problem, then anger and being assertive is very good. So the fine line is that you should not ruin your own health. Right? Not that you get every small thing. You order a tea, they bring you coffee, and you throw the coffee on them. Can't justify that, right? So I'm saying that make sure that anger as an emotion per se is not bad, but I believe that the change in society will be led by those who get angry. So angry is a good emotion, right? Amitabh Bachchan had this tag of being an angry young man. He was a hero, right? Because when he says, "Agli baar ek vyakti aur chala nahi dega," whatever dialogue was in the film Diva, it became a hit. So you have to get angry at times, but make sure that in the particular moment you should be angry on a particular subject, not with a certain person. And the choice of words should also be in a manner which does not affect the personality person, right? You cannot demean a person. He is a person. You cannot demean a particular person. So let's really come to the subject. We can disagree on a subject. I can disagree with you on a subject, but I can still have respect for you. And I think as a human being, we have to come to that evolution where we can disagree, yet we have respect for each other. Yes, please. I am Toastmaster Amit, and my question is, as you told, life skills are more important than the technical skills. So, what are the top 5 skills that we should have? So, top 5, let's go to the 5 senses only. So, make sure that what you see, you got observation. You know, what you listen in is good quality. What you speak is absolutely sweet. You know, on sweetness, I like to narrate a few lines कि मिठास मुंह में आ जाए तो स्वाद, दिल में आ जाए तो प्यार, और रिश्तों में आ जाए तो बाहर. So make sure you hear well, you smell the news, you know, if you have nose for the news, speak well, all of that, right? And even the skin. When you go somewhere and the energy is not aligned to yours, then you will actually know. These are the life skills. You go into a restaurant, people said, oh, this one, 79 BOA is very good. They say, oh, Redison Blue food is very good. And you enter the restaurant, but you don't get the energy. You don't eat the dosa there, eat somewhere else. But right now, sometimes the status symbol, no, I have to eat only at Sagar Ratna. Even if it is absolute bad, you still have to eat. Don't get into this perception. Right? So those are the 5. I'm saying the 5 senses right here. It's right here. Because when you go somewhere, it is your face. And trust me, somebody who gets these life skills right, if you look at their face, and you will find a sense of calm. And the more it comes, the more that face radiates. You cannot take the eyes of somebody who's a radiant face. Yes or no? Radiance will come. Radiance comes when you actually practice detachment. You get everything, you still practice detachment. Yes. Guys, we will take only 2 more questions. Okay. So, hi, this is Divya, Toastmaster Divya. Generally, I also form perception. It's a major, but my perception, मैंने कुछ time पहले किसी के लिए perception नया वो break हो गया. So now, give me a tip how I should not make a perception because by default it happens because of human nature. Right. So I'm saying learn from your past experience. अगर आपको लगा अगला व्यक्ति बड़ा समझदार है, अब वो निकला, निकम्मा, तो आप उसको अगली बार समझदार मत समझिए. आप समझदार बन जाइए. So I'm saying that make sure that sometimes you are driven with beliefs, and that happens because as a child your parents only ingrain that beliefs in you. But when you grow up, you realize no, that is not right. You know, like for example, let's talk about gender equality. कोई मुझे याद है हमारे घर में भी यही होता था कभी-कभी कि अगर गेस्ट आ गया तो वो कहते थे कि भाई जो बेटिया है तू चाय बना दे और तू नीचे सामान ले आ. तो आप ऐसे कहते हैं मैं डोली है मैं नीचे सामान लिया. तो आपको लगता है मैं सामान ला सकता हूँ, मेरे डोले में सामान ला सकता हूँ. दूसरा नीचे में कुत्ते भी खड़े हैं, बंदर भी खड़े हैं, तो मैं जा सकता हूँ. मुझे डॉग से डर नहीं लगता. और बिटिया ने वो चाय ही बनाएगी. नहीं आप बोलिए ना, मैं लाती हूँ सामान, इसको कौन चाय बनाए. तो मैं कह रहा हूँ कि भेदभाव कभी-कभी घर से भी शुरू हो जाता है. तो लिहाजा ये परसेप्शन इसलिए है क्योंकि हमारे आ ही गया. मुझे कभी लगता है आपको थोड़ी लड़ाई माँ बाप से करनी पड़ती है. मुझे जनरेशन गैप में तो हर्ष नहीं दिखता. जनरेशन अलग है तो गैप भी होगा.
और आपको आगे बढ़ना होगा। आप आज कहते हैं महिला सशक्त हो जाए, महिला जब सशक्त हो जाती है, परिवार तैयार है उस सशक्त महिला को समझने के लिए, फिर तो लिहाजा धीरे धीरे बदलाव लाएंगे और उससे परसेप्शन टूटेगा भी, बनेगा भी, टूटेगा भी, बनेगा भी। I have a question. Yes, sir. So, sir, yes. You have since you have observed all the leaders for hours, their action. What do you think is the source of their confidence? You have seen their body language for hours. What do you think is the source of their confidence? Yeah, I think the source of their confidence is the connect that they have with the people and the fact that they are very conscious of their being. So when we are aware of something outside, that's awareness. When we are conscious of something inside, that's being conscious. Say for example, Prime Minister Modi. I've covered 6 Prime Ministers. From I.K. Gujral to Vishwanath Pratap Singh to Prime Minister Modi. I'll give you one example where you will find that how he's so conscious. We can disagree with the ideology of any politician, but I'm telling you how, and even at the age of 70 plus, he works 16 to 18 hours. And since we work very close to the PMO, because I cover Prime Minister and I've done commentary for almost everything big that happens in India. So I remember on one fine occasion, he was at some village in India where they were launching a certain scheme. So ahead of the Prime Minister speaking, we had this Gram Panchayat leader. She was a girl and she almost had a little veil and she was speaking. So the MC said, now first of all, before we go to the Prime Minister, I invite Radhe Devi, whatever her name was, and please say something. She's a leader of the Gram Panchayat and people clap and Radhe Devi comes. She has a certain beat to her and she doesn't really know how much to speak. तो दूसरा बराबर होता नहीं। तो वो जो आपका माइक था वो ऐसे था और राधे देवी थोड़ा छोटे करती थी, वो पढ़ने लग गई ऐसे यहाँ से कि मैं प्रधानमंत्री का करती हूँ, स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री रिलैक्स की माइक ऊपर है, तो प्रधानमंत्री उठे और माइक थोड़ा नीचे कर दिया। प्राइम मिनिस्टर गेटिंग अप, वेरी बिग थिंग, आपने नीचे कर दिया तो आवाज की कारण में थे और लोगों की तालियां बहुत आई। तो राधे देवी जो पढ़ रही थी, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, इतनी तालियां आई, तो जब उसने देखा ये नहीं कर पाई, उसको लगा मेरे लिए ताली बजी है, तो बाद में उसको लगा हुआ क्या है, ये तो जाकर बैठ गए। So I'm saying, see how he's so conscious. He is very conscious. The moment he enters, his eyes will not miss anything. Is he having too much of qualification? Almost nothing. But see how he understands everything. Sometimes as a journalist, we actually feel the way he has endorsed technology. I remember during the Prime Ministership of Dr. Manmohan Singh, when we used to read news on DD News, तो न्यूज़ पढ़ने के बाद हमको चलता था, हाँ अगर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहें तो हमारा पता नोट करें, दूरदर्शन न्यूज़, मंडी हाउस, नई दिल्ली 1100 she used to say that, right? Till about 2014. When the Prime Minister came, he went on Twitter, he was on Insta everywhere. Because Doordarshan, All India Radio, we used to think we'll never go on Twitter, it's a private thing, we'll never go on Facebook. Now the Prime Minister office is gone, so even Doordarshan went. Now when we are reading news, we're saying tweet us like this and that, everything. So the point is that when you talk about this, it is about the connect with the audience. Why did Congress lose the 5 states? If you're not sure of your leader, right now, if you ask who's the Congress leader, you are not sure. भाई का विकल्प बहन का विकल्प भाई, दोनों ने बन पाए तो माता जी को आई जाती है इसलिए कह रहे। This does not work. This is where the disconnect is. And therefore the feeling is, last night the G23 group met, all big leaders of Congress, and saying, Congress, the moment you find vacuum in leadership, people feel कि भैया अगर इनको ले आए, चलाएगा कौन? Till about 6 months back, had they not broken with Captain Amrinder Singh, Punjab was having a very good chance of getting 50 plus seats. Now see, Captain went there, Sidhu, here, there, everywhere. Chani just came, people thought he'd do well, but with his blunder of not giving protection to Prime Minister, you can have differences, but you cannot block the Prime Minister. He is the Constitution says he's the Prime Minister. Do face security. You cannot have the security lapse, right? Backfire. He's contested from 2 seats, lost from both. I'm saying forget about political. I'm saying to the question that you asked, what is the source of their confidence? In a democracy, it's we the people. The moment there is a disconnect from the people, you are gone no matter how tall a leader you are. Harish Rawat lost 30,000 votes. Pushkar Singh Dhami, Chanil Singh lost. Captain Amrinder Singh lost. Sidhu lost. Just speaking with no substance, lose. People feel the energy. You cannot misguide people with energy. Energy is always going to embrace truth. So truthful energy.
Okay, good. So that was the last question from the audience. Since I told you. So there is a last question. This is one last question. Okay, one last question from the audience, and then one last question from me, and that is where we wind up. Yes, please. So thank you very much for your presence today and giving us the acronym of leadership. I think every one of us will remember it throughout lives. My question is that what is that one thing out of your experience you can give us as a perception to improve our perception for everyone here as an advice? Yeah. So I'm saying that the perception right now is there because we see it from our 5 senses. Our endeavor has to see beyond the physical, which is what we call meta. I'm saying till the time we get enlightenment towards that, and we have our own experience, which will happen when we not think about it. It is not as if you think, okay, अभी 5 बज गए, आज 6 बजे ऐसे करते हैं, थोड़ा सा कुछ enlightenment कर लेते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है, right? The more you put time, the more you put it on your brain, it will not happen. All I'm saying, my advice is, at least the 5 senses that we have, please use them properly. Use skin to sense the goodness of the energy. Use eyes to also see and observe a little bit more closely. Use your ears, not just to listen in what's being said, but also to read between the lines. Smell the news. And when you speak, make sure first of all, don't speak much. But when you speak, make sure that you make sense with the word. If you're not making sense with words, better be silent. That's why speech is silver, silence is gold. So one final question. I told you I'm a journalist. The only skill I have is asking questions. So I started with a question. Now I'm ending with a question. Maybe see if somebody can get it right. What do you think is going to be my last line? I started with saying thank you. I always start by saying thank you. What will be my last line? Let's have a few people guessing it. मैं पत्रकार हूँ, क्या लगता है आपको मेरी आखिरी लाइन क्या होगी? ना जी, ना जी. मिलते हैं ब्रेक के पास. फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद. That's close to what probably is the right answer. Yeah. आपसे मिलकर खुशी हुई. Okay, very nice. That's also pretty interesting. Okay, तो ट्रक के पीछे निकल रहे थे. Part 2 coming soon. Part 2 coming, okay. Once upon a time in Delhi, दोबारा. Do watch my movie. अभी इसको 11 रुपए दो भैया मार्केटिंग के. जून में देख लेना. पिक्चर का नाम है फ्राइडे. ठीक है? पिक्चर ऑन फ्राइडे. Very good. Thank you. I just forgot that. Thank you for saying it. That was not what I was intending to. मेरी आखिरी लाइन क्या होगी? पिक्चर अभी बाकी है मेरे. ना जी. काफी फिल्मी डाला हुआ है वैसे. मिलते हैं ब्रेक के बाद बट कैमरामैन गगन के साथ. That's right. My last line is कैमरा पर्सन कनिका के साथ मैं अमित अरोड़ा, टोस्टमास्टर दिल्ली से. Thank you very much.